हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, क्विज भी आ गई है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज। सो काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गैप मुझे रोनी प्रभु बता रहे थे कि हो गया हमारी क्लासेस के बीच में। आज भी हम लोग शायद 6-7 लोग ही हैं। सो इसीलिए बोलते हैं कि कोई चीज़ स्टार्ट करना आसान है, उसको ख़त्म करना भी आसान है, पर उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए जो सृष्टि है उसका जो क्रिएशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रह्मा जी के पास है, डिस्ट्रक्शन की शिव जी के पास है, और जो मेंटेनेंस है वो भगवान स्वयं अपने पास लेते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इन इन टॉपिक्स के अंदर एक कंटिन्यूस इंटरेस्ट बनाना भी, हाँ, इज ऑल्सो नॉट सो इजी। हर रोज पढ़ते हैं नित्यम भागवत सेवया, हर रोज पढ़ते हैं भागवतम पढ़नी चाहिए, इतने सारे श्लोक डिवोटीज और डालते हैं ग्रुप्स में, और जो प्रभुपाद कोट्स है, सो कई बार मुझे लगता है कि उसका कुछ फर्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता, या हम लोग आगे फॉरवर्ड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पर दुखी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अपने सेल्फ इंटरेस्ट में हमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, है ना। हम लगते हैं कि बाकी सबका बेड़ा पार हो जाए, हम जो है वो देखी जाएगी जो भी होना है। सो विल ट्राई टू बी मोर strict in our this and not miss the classes। और अब थोड़ा सा 1-2 दिन और चैलेंज रहेगा, 6th और 7th को जन्माष्टमी के लिए। बट देन आफ्टर जन्माष्टमी देन प्रभुपाद आविर्भाव दिवस will come, and then from that day we will make it a no gap classes। ओके, सो प्रभु ये मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये मैंने गेम के लिए किया और ये सब यूनिवर्स बन गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। Now, but other devotees have played. अच्छे आ गया प्रभु जी इसमें। कैन यू स्टार्ट द मंगलाचरण? आई जस्ट डू द क्लोज, जस्ट डू द मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, सो लेट्स सी द, अच्छा, ओह, ये अतुल प्रभु कैसे पीछे हो गए? नहीं नहीं हो रहे। नहीं हुए? हाँ नहीं हुए, हाँ नहीं हुए, नहीं हुए। यू आर देयर ऑन द टॉप, यस। नहीं, आई एम ऑन द गुड। Wonderful, yes, that's how we want to see it. So Atul Prabhu is there, then I'm there, then Anshi Mata ji, then Shivani Mata ji, then Pinky Mata ji, then Vijay Mata ji. Okay, so out of 9, 5 have played. Okay, and which questions have the devotees got it wrong? Is it the same question? Must be the one, because this was the difficult one. Which one? The Lord is known as.
हाँ, ये तो मैंने भी तुक्का ही मारा था प्रभु जी, क्योंकि मुझे लगा बाकी नहीं हाँ, नहीं करते हैं, तो करेक्ट भूत बृहत मुझे लगा यही होगा. सो करेक्ट इट्स नॉट दैट आई वाज इन नॉलेज, बट इट वाज जस्ट ए लिटिल वाइज गेस. करेक्ट. बस यही गलत हुआ है सबका. नहीं प्रभु जी, एक और है. इटर्नल टाइम. हाँ, दिस वाज कंपेयर्ड टू स्नेक. अच्छा, ओके. आई कुडंट फाइंड. ओके, और कौन सा हुआ है? और तो ह्यूमन बीइंग यूनिट फॉर सेलिब्रेशन नॉट. ओके, ये तो गलत. पहले वाला क्वेश्चन दिखा ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन एक था ना, 3 मोड्स के ऊपर जो है टाइम है. वेयर इज द क्वेश्चन? ये वाला. Above the 3 modes of nature is eternal time. So always remember that the position of Lord Shiva, who represents time, is always higher than that of Durga. One must understand this philosophical conception. Where is Durga and where is Lord Shiva? So obviously he's the husband. His position is up, but even philosophically, so his position is higher than. You know, like this, in that manner, philosophically. Hare Krishna. So let's see the verse, Prabhuji. So ये बहुत सुंदर जो आपका प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से जो धृतराष्ट्र को घर छोड़ने के लिए क्या कह सकते हैं, मजबूर किया जा रहा है उनको. ही इज इंस्टिगेटिंग Vidur. He's instigating Dhritarashtra ki how why he should leave home. और अब वो उनको लगा कि नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उनको पिंच करना शुरू किया कि किस तरह से. और उसके बाद जो है अब ये जो महाराज युधिष्ठिर हैं, तो वो अब नारद जी से बात कर रहे हैं, और वो किस तरह से वो बताते हैं कि वो चले गए. उनको तो दुख हो रहा है बेचारों को कि मेरे जो पिता सामान्य जो ताऊ जी थे वो छोड़ के चले गए. और किस तरह से उनको महाराज युधिष्ठिर जो है वो उनको ज्ञान दे रहे हैं. तो you'll find in all the जितनी भी हमारी परंपरा है, उसके अंदर आप पाएंगे कि जो नारद जी का स्थान है वो बहुत ऊंचा है. उन्होंने इतने बद्ध जीवों का उद्धार किया है और जिसकी कोई सीमा नहीं है. आप पाएंगे कि जितने भी डिवोटीज हैं, प्रहलाद महाराज हों, ध्रुव महाराज हों, और इतने सारे, कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया है. और कितने भगवान के पास टाइम्स में आते हैं. एक बार हमारे ग्रुप में सौरभ प्रभु थे, यानी आस थे नहीं हैं, ही आस सौरभ बाटला प्रभु ही आस कि हम इनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं. ऐसा कुछ प्रसंग चल रहा था, और उन्होंने ऐसे बोला कि हम इनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं. सो इट गॉट मी ऑल्सो स्क्रैचिंग माई हेड, यस, इनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं. देन आफ्टर सम डेज आई व्हाइल डूइंग जपा आई हैड द रियलाइजेशन कि उनकी पूजा हम परंपरा को पूछ के करते हैं, क्योंकि वो परंपरा में है. तो ऐसे तो परंपरा में बहुत सारे ऐसे दिव्य पर्सनैलिटीज आई हैं. सो पर हम देख सकते हैं कि जो नारद जी का जो स्थान है वो बहुत बहुत ही ऊंचा स्थान है. उनके पिता से भी ऊंचा स्थान है उनका. जबकि जो उनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी, वो हमारे संप्रदाय के हेड हैं, है ना. पर हेड होने के बावजूद ही हैज ए पोजीशन, बट जो नारद जी पोजीशन इज सो स्पेशल. सो ही इज अ गुड पर्सन टू, उनकी जो दी हुई जो संदेश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उपदेश हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, अगर हम उनको ठीक से करेंगे, सो आई एम श्योर दैट कृष्णा इज विल बी हैप्पी टू कि हम एक ठीक पर्सनैलिटी के फॉलो कर रहे हैं. सो इट इज गुड टू build some relation with Narad ji. So now we'll read the shloka 1349. Prabhu, यही है? अच्छा, यही है. Okay.
So सोयम अद्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो श्याम अभावाय सूर्द्विषाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sorry, Krishna. That Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, in the guise of all devouring time, Kala Rupa, has now descended to the earth to eliminate the envious from the world. So he's not saying to remove immoralists from the world. He's saying to remove envious people from the world. Who was the height of envy? Duryodhan. he's the personification of envy. He's so envious. Like that. There are two classes of human beings, namely the envious and the obedient. अभी बताएंगे आचार्य की envious किससे envy हो रही है. Since the Supreme Lord is one and the Father of all living beings, the envious living beings are also his sons, but they are known as asuras. But the living beings who are obedient to the Supreme Father are called devatas or demigods, because they are not contaminated by the material conception of life. Not only are the asuras envious of the Lord in even denying the existence of the Lord, but they are also envious of all living beings. So ऐसा नहीं है कि उनकी जो ईर्ष्या है वो केवल और जीवों तक ही सीमित है या पर उनकी जो ईर्ष्या है वो जीवों से शुरू होकर भगवान तक जाती है, पर यूजुअली भगवान से शुरू होकर दूसरे जीवों तक जाती है. सबसे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत. सो पहले जो द्वेष जो होता है वो भगवान के साथ ही होता है. उनकी जितनी आप पाएंगे कि जितनी ताकत असुरों में है, देवताओं में है, उतनी ही असुरों के अंदर भी है, क्योंकि कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लाइक दिस. सो बट द मेन थिंग इज कि वन सेट ऑफ people whom we call sura or devtas, they are subordinate to the will of the Lord. They understand his position. And another set of people who are called asuras, they are envious of the Lord. आप पाएंगे कितने ज्यादा समय प्रभुपाद ने लोगों को बोला कि दुष्कृताम नराधम आसुरिन, what is that? आसुरिन भावम आश्रिता. आसुरिदम भाव आश्रिता. कितने लोगों से प्रभुपाद इतने स्ट्रांगली बोलते थे. आज तो हमारे संस्था में ज्यादा लोग ऐसे नहीं बोलते. Everybody wants to keep everybody happy, but mostly, you see, of course, his stature, his age, he could speak all those things, and Prabhupada said also कि मैं कह सकता हूँ, आप लोग नहीं कह सकते. But thing is, to call a spade is not a bad thing. और ये देखना और ये समझना कि जो लोग हमारे आसपास हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिनको हम अच्छा मित्र, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा पैट्रियट, अच्छा ये, अच्छा कुछ भी मानते हैं, ये अच्छा व्यक्ति मानते हैं. सो और है क्या? आसुरिम भावित आश्रिता, कि उनके अंदर आसुरिक भावना भरी. बट बिफोर वी स्टार्ट जजिंग अदर, वी मस्ट अंडरस्टैंड फॉर अस ऑल्सो कि वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज. क्योंकि अगर हमारे में ये भावना ना होती, तो वो हमारा जो समर्पण का लेवल है वो बहुत ज्यादा होता. इतने कम समर्पण के लेवल के ऊपर हम अपना जीवन ना व्यतीत कर रहे होते. सो उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, हमारे अंदर थोड़ी सी कम है. हमें बोलना आ गया है, क्या बोलना है ना. हमें समझ में आ गया है कि सुबह पर्दा खोल के ठाकुर जी को धूप अगरबत्ती दिखानी चाहिए. बट वो बाकी के जो है, वो जो आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट या 7 मिनट हमने भगवान के सामने लगाए, और उसके बाद उनको
भोग लगाने के अलावा हमने क्या किया, हाँ, और किस तरह से उठाते हैं और किस तरह से सुलाते हैं, और हाँ, तो उसकी चर्चा ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज इट विल बी जस्ट एम्बेरसमेंट. सो वी शुड नॉट जज अदर्स. इट्स वेरी क्लियर, but we should know in our heart to whom, why I am speaking all this is, we should know to whose association I am taking. If we are not careful and we think this person is very good human being, ये मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, या ये है, या वो है, ये रिश्तेदार है, जो भी है, if we take their sang, which means we open our heart, they open their heart, we lovingly have prasadam together, uh, or food together, or or we give a gift out of love and receive a gift out of love. So when we do these 6 exchanges, so that means we are taking their association. Association does not mean कि सब्जी वाले की एसोसिएशन ले रहे हैं क्योंकि सब्जी ले रहे हैं, डेंटिस्ट की एसोसिएशन ले रहे हैं क्योंकि हमारे मुंह के अंदर घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है. But association means these 6 loving exchanges. So we should be very, very careful whose association are we taking. And if we take association of those who are envious of the Lord, then we will get contaminated by the same thing within us also. उससे हम बचे नहीं रहेंगे. आगे बढ़ते. Sorry. Hare Krishna. Not only are the asuras envious of the Lord in even denying the existence of the Lord, but they are also envious of all living beings. है ना, क्योंकि वहां से शुरू हुए तो वो कहाँ तक जाती है, जानवरों तक जाती है कि इनके अंदर भी आत्मा नहीं है, इनके अंदर भी शरीर नहीं है ना, उनके भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उनको भी मार मार के, उनको गैस पे भून, बैंगन के भरते की तरह भून भून के उनको भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कहने को वी आर vegans, we are following, but from even those who follow that also, you see that the all our ecosystem around us, our shoes, our belts, our bags, everything made of animal products. अब थोड़ा सा वीगन के आने से फर्क पड़ा है क्योंकि वो वैक्सीन को वीगन बोल के बेचते हैं, सो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है. and they cater to a growing clientele in the West, जिसको भारतवासी बड़े शौक से, बड़े प्राइड से फॉलो कर रहे हैं. The predominance of asurs in the world is occasionally rectified by the Lord when he eliminates them from the world. Paritranaaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. Sorry. The predominance of asurs in the world is occasionally rectified by the Lord when he eliminates them from the world and establishes a rule of devatas like Pandavas. Dharma sansthapanarthaya. So which means devotees are ruling the world. His designation as Kal in disguise is significant. He is not at all dangerous, but he is the transcendental form of eternity, knowledge, and bliss. For the devotees, his actual form is disclosed, and for the non-devotees, he appears like Kalarupa, which is a causal form. This causal form of the Lord is not at all pleasing to the asuras. Therefore, they think of the Lord as formless in order to feel secure that they will not be vanquished by the Lord when at the time of death. So this Kalarupa, so is the Lord in disguise, they're saying. So why? Because the shlok is saying, he is coming in the guise of a and disguise, in the disguise of a time. So why he's in disguise? Because to the devotees, he comes as Sham Sundar, Duibhuja, and to the asuras, he comes as death, which is absolute, which is the only absolute thing in the world, जिससे कोई बच नहीं सकता. Sorry. Yes, Ronnie Prabhu, you want to read? Go ahead. निष्पदितं देवकृत्यम् अवेशशां प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवे सध्वम्
Bhavet yavat iheshwarah. The Lord has already performed his duties to help the demigods, and he is awaiting the rest. You Pandavas may wait as long as the Lord is here on earth. The Lord descends from his abode, Krishna Lok, the topmost planet in the spiritual sky, in order to help the demigod administrators of this material world when they are greatly vexed by the asuras, who are envious not only of the Lord but also of his devotees. As referred to above, the conditioned living beings contact material association by their own choice, dictated by a strong desire to lord it over the resources of the material world and become imitation lords of all they survey. Everyone is trying to become an imitation god. They are there is keen competition amongst such imitation gods, and such competitors are generally known as asuras. When there are too many asuras in the world, then it becomes a hell for those who are devotees of the Lord. Due to the growth of the asuras, the mass of people who are generally devoted to the Lord by nature and the pure devotees of the Lord, including the demigods in high planets, pray to the Lord for relief, and the Lord either descends personally from his abode or deputes some of his devotees to remodel the foreign condition of human society or even animal society. Such disruptions take place not only in human society but also among animals, birds, and other living beings, including the demigods in high planets. Lord Sri Krishna descended personally to vanquish asuras like Kans, Jarasandh, and Shishupal, and during the reign of Maharaj Yudhishthir, almost all these asuras were killed by the Lord. Now he was awaiting the annihilation of his own dynasty called the Yaduvansha, who appeared by his own will in this world. He wanted to take them away before his own departure to his eternal abode. Narad, like Vidar, did not disclose the imminent annihilation of the Yadu dynasty, but indirectly gave a hint to the kings and his brothers to wait till the incident happened and the Lord departed. Go ahead, Prabhuji. Yes, yes. We discussed. Verse. Next verse. Yes, Prabhuji. Dhritarashtraha sah bhatra bhratra gandharya cha swabharyaya dakshinena himavata rishinam ashramam gata. O king, your uncle Dhritarashtra, his brother Vidar, and his wife Gandhari have gone to the southern side of Himalaya mountains, where there are shelters of the great sages. To pacify the mourning Maharaj Yudhishthir, Narad first of all spoke from the philosophical point of view, and then he began to describe the future movements of his uncle, where he could see by his foreseeing powers, and thus began to describe as follows. Shrotobhi saptabhiryave swardhuni saptadha vyadhat saptanam pritaye nana saptashrota prachakshate. The place is called Saptshrot, divided by seven, because there the waters of the sacred Ganges were divided into seven branches. This was done for the satisfaction of the seven great rishis. Snatvanu swavanam tasmin bhutva chagnin yatha vidhi abhaksha upashantatma sa aste vigateshana. On the banks of at Saptshrot, Dhritarashtra is now engaged in beginning Ashtang Yoga by bathing three times daily, in the morning, noon, and evening, by performing the Agnihotra sacrifice with fire, and by drinking only water. This helps one control the mind and the senses and frees one completely from thoughts of familial affection. The yoga system is a mechanical way to control the senses and mind and divert them from matter to spirit.
The preliminary processes are the sitting posture, meditation, spiritual thoughts, manipulation of air passing within the body, and gradual situation in trance, facing the absolute person, Paramatma. Such mechanical ways of rising to the spiritual platform prescribe some regulative principles of taking bath daily 3 times, fasting as far as possible, sitting and concentrating the mind on spiritual matters, and thus gradually becoming free from Vishay or material objectives. Material existence means to be absorbed in the material objective, which is simply illusory. Hmm. House, country, family, society, children, property, and business are some of the material coverings of the spirit, Atma, and the yoga system helps one to become free from all these illusory thoughts and gradually turn towards the absolute person, Paramatma. By material association and education, we learn simply to concentrate on flimsy things, but yoga is the process of forgetting them altogether. Modern so-called yogis and yoga system manifest some magical feats, and ignorant persons are attracted by such false things, or they accept the yoga system as a cheap healing process for diseases of the gross body. But factually, the yoga system is the process of learning to forget what we have acquired throughout the struggle for existence. Dhritarashtra was all along engaged in improving family matters by raising the standards of living of his sons or by usurping the property of the Pandavas for the sake of his own sons. These are common affairs for a man grossly materialistic and without knowledge of the spiritual force. He does not see how things can drag one from heaven to hell. By the grace of his younger brother Vidur, Dhritarashtra was enlightened and could see his grossly illusory engagements, and by such enlightenment he was able to leave home for spiritual realization. Sri Narad Dev was just foretelling the way of his spiritual progress in a place which was sanctified by the flow of celestial Ganges. Drinking water only, without solid food, is also considered fasting. This is necessary for advancement of spiritual knowledge. A foolish man wants to be a cheap yogi without observing the regulative principles. A man who has no control over the tongue at first can hardly become a yogi. Yogi and bhogi are two opposite terms. The bhogi, or the merry man who eats and drinks, cannot be a yogi, for a yogi is never allowed to eat and drink unrestrictedly. We may note with profit how Dhritarashtra began his yoga system by drinking water only and sitting calmly in a place with spiritual atmosphere, deeply absorbed in the thoughts of the Lord Hari, the personality of Godhead. हरे कृष्ण. सो इसे हमने पूरा श्लोक पढ़ा. एक तुमने पढ़ा किस तरह से प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि योगा सिस्टम का गोल क्या है और हाउ इट इज ए मैकेनिकल सिस्टम. हाँ, ताकि अपने जो इंद्रियां हैं, अपना मन है, उसको कंट्रोल करके कि हमारी जो चेतनता है, हाँ, वो स्थूल में ना जाए बल्कि दिव्यता के भगवान की तरफ जाए. This is the goal of actually all the yogas, the Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. The goal is to control the senses, because that is the most troublesome part for any person is the senses. So first we have to control the senses, and the yoga, the Hatha Yoga or this Ashtanga Yoga, they are for people in bodily consciousness, so that by force you are able to our consciousness from matter to spirit. और जैसे हमने पढ़ा कि one should try to be gradually free from विषय और material objectives. हाँ, material, and Prabhupada लिख रहे हैं कितना सुंदर है. देखिए कि material existence means, so what does material existence mean? I'm so sorry. Material existence means to be absorbed in the material objective. And what are those material objectives? House, country, family, society, children, property, business. This is illusion. Prabhupada writing, these are some of the material coverings on the spirit, Atma.
And the yoga system helps one to become free from all illusory thoughts by turning towards Paramatma. Because Ashtanga Yoga, the goal is to have experience of Paramatma in our heart, like this. So ये हमें भी देखना चाहिए भक्तों को, कि हमारा जो है कि are we living a spiritual existence or we are living a material existence? Is my goal simply house, country, family, society, children, property, business, or I have goal is to please devotees and please Krishna? So अभी जन्माष्टमी का समय है, हम लोग सब डोनेशन मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि बहुत बार कि जो so called we say seniors, they pinch so much to give, and it is the new ones who are enthusiastic. So हमेशा याद रखना चाहिए कि our goal should not be material existence. कि हम अपने बच्चे को एक 8 लाख रुपए की बाइक लेके दे रहे हैं, और जब डोनेशन कह रहे हैं तो कह रहे हैं प्रभु जी बिना सोचे समझे 2100 रुपए मेरे डाल लीजिए, like this. So we should be clear what existence am I living in, that we should not fool ourselves. Actually बहुत सारे भारतीयों में ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक मैलापन रहता है, जिससे वो अपने आप को धोखा देते हैं कि अगर हम सेवा करते हैं तो वो ज्यादा है, और जो मेवा है वो मेरे लिए है. सेवा फॉर भगवान एंड मेवा फॉर माई सेल्फ. बट भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि चीटिंग करने वालों में सबसे बड़ा चीटर मैं हूं. सो द मोस्ट थिंग वी विल गेट चीटेड आउट ऑफ इज द भक्ति. और कुछ नहीं होगा, केवल हमें जो संग मिलना चाहिए, जिस संग की हमें ख्वाहिश है, ये भगवान देना चाहते हैं. हो सकता है हमारे अंदर अपने अंदर वो एस्पिरेशन ना भी हो, पर जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए है वो हमें नहीं मिलेगी. सो ये जितना भक्तों के लिए ट्रू है भागवतम, आप पाएंगे थोड़ा सा गहरा डुबकी मारेंगे तो सेम थिंग वी कैन टर्न इट टुवर्ड्स अस एंड सी मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस. मेरी एग्जिस्टेंस के अंदर, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि जिनके घर में, सब भक्तों के घर में ऑल्टर होते हैं, विग्रह होते हैं, पिक्चर होती हैं, बट केंद्र बिंदु हम देख सकते हैं वो क्या है ना. कि केंद्र बिंदु है कि सुबह 15 मिनट आरती कर ली, खाना खाना है तो ठीक है, इनको भोग ला के खाना है, शाम को और आरती की और किस तरह से सुलाए और खुद भी सो गए. हाउ मेनी ऑफ अस रीड समथिंग टू ठाकुर जी, हाउ मच ऑफ अस share our heart with Thakur ji, how much of us decorate Thakur ji with all the ability I've got. और ऐसा नहीं कि एबिलिटी माता जी लोगों में ही है. आप पाएंगे मंदिरों में माता जी तो इतने श्रृंगार नहीं करती, सारे श्रृंगार जो है वो प्रभु जी लोग करते हैं, एंड दे डू इट सो वंडरफुल. बट क्वेश्चन इज हमारे में वो एस्पिरेशन ही नहीं. और स्पेशली जब हम प्रचार करते हैं हमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि इट्स ए हायर सर्विस, intellectual thing, it inspires us, we get more knowledge, but उससे कुछ होता नहीं है ज्यादा, because of obviously it also depends upon the status of my heart, but more important is to see कि जो इसमें लिखा है कि am I living a material existence or I am trying to change into a spiritual existence. Is my goal my house, my country, family, society, children, property, business, and how much I am trying to collect to give it to the next one, and how much I am collecting to give it to Krishna. ये भी देख सकते हैं इसमें. How much I collect, how much I am collecting for myself, for my retirement plan, this share or this mutual fund or this FD or this instrument and that instrument. How much I am trying to collect? It is not hidden from Krishna. How much I am trying to collect for myself and how much I am giving to Krishna. So that also shows how much faith I have in myself and how much faith I have in Krishna. Once, many times devotees, senior devotees, they tell me that my wife is a better devotee than me, and many times I get that example multiple times. और अभी कुछ
she's not listening. She's not listening. Pitai hoegi. So, so I was speaking and I was sharing what we must say, and there is nothing. And she told me, what is the problem? Jagannath with you. What is the problem? Why you worry? And hearing from her made me, ashamed to a very high degree. To see. So it is not some, what can say, just a sentiment, but one can see there is a Shraddha, there is Shraddha for the Lord, and I am trying to save. And it is not, we should not save, but I'm saying we should see how much I am saving, which is okay, but how much I am giving also to Krishna. That proportion we will see will be 100th, 150th, or 1000th, or one, it won't be even 1/2 or 1/3 or 1/4. Because we want, we and it is okay to be gradually progress in that path is also okay. But we should also see gradually Krishna's share should increase. That is the main thing. His share should increase. That shows our bhakti is increasing. Like this. And that shows I have faith. Krishna will take care of me. Like that. So जब ये भागवतम पढ़ते हैं, इसका सबसे अच्छा पढ़ने का एक जो रिजल्ट निकलता है, वो यही आता है कि हमें भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए और मटेरियल चीजों से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए. अगर वो उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम ठीक से सुन नहीं रहे या ठीक से पढ़ नहीं रहे. सिर्फ सेवा में एंगेज होना is good, but we have to see other part of our life also. Just by giving physical service to Krishna, like I said, ki seva to Krishna and meva for myself, it won't go for very long like this. So sometime we have to change gears unless our hidden agenda is to become a devta, and that is all. And that we say is fine. We accept Krishna as the Lord. He's the supreme Lord, and he's there to give me also a good facility because I'm a good servant. Like this. So that is up to us. What do we want from seva? What do we want from devotee association? What do we want from reading Srimad Bhagavatam, serving Srimad Bhagavatam? And a beautiful way to establish that relationship and the heart connection with Krishna is to read Bhagavatam to Krishna, to the picture in our altar, to Thakurji in the altar. Read Bhagavatam. And we find a very different effect in our consciousness when we do that. Oh, I'm sorry. I've taken so much of your time. So thank you so much for coming and reading. Now we are 10, 11. Okay. So thank you. We will, Krishna willing, we will be more regular from henceforth. Hare Krishna. So we'll end the session. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Narasimha Bhagwan ki jai.